Chingari signifie étincelle en hindi. Une étincelle de vie pour 300 enfants qui viennent presque tous les jours dans ce centre de réadaptation. 700 autres sont sur liste d'attente. Chingari se trouve à moins d'1 kilomètre de l'usine Union Carbide. La fondation a été créée en 2006 par 2 survivantes de la catastrophe de Bhopal. Rachida Bi est l'une d'elles. वालेकुम अस्सलाम और सब खैरियत अच्छे हो सुफियान मुकीन नाज रेहान राजी अल्फिया और यूनियन कार्बाइड के जहरों का जो असर है आज 35 साल होने को जा रहा है, उसका असर बढ़ता जा रहा है। तो वो उन जो बच्चे बड़े हुए, पैदा हुए, बड़े हुए और उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हैं ये जो दूसरी और तीसरी पीढ़ी में विकलांग पैदा हो रहे हैं, उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी इंतज़ाम ऐसा नहीं हुआ। Conséquence d'une exposition au gaz toxique pendant quelques heures en 1984 et de décennies de consommation d'eau contaminée. वेव करो, हैंड से वेव करो Actually, the part of the city is untouched with the other therapists. Nobody tries to work with these children because they are not giving money to them. And we are in Chingari giving them the therapy with free of cost, and they are getting help from us. I deal with physical disabilities here. Then we deal about multiple disabilities like CP and Down syndrome and muscular dystrophy and motor neuron diseases and various others. Toshiba a 13 ans. Elle est hémiplégique. Sa mère, née juste avant la catastrophe en 1983, est toujours à ses côtés. Slowly. ज़्यादा support नहीं. Right support. लो. डरो मत. धीरे करो. जी हाँ, ये 2.5 साल की उम्र से लेकर आ रही हूँ मैं इनको। तो ये बिल्कुल भी बोलती नहीं थी, ना चलती थी, ना ही बैठती थी, ना इनकी गर्दन सही रहती थी। जब से इनको यहाँ लेकर आ रही हूँ तब से ये चलने भी लगी हैं, थोड़ा खड़ी भी होती हैं और स्टेप भी लेने लगी हैं, चलने के लिए बोलने भी लगी हैं। बहुत प्रोग्रेस मिला है यहाँ से इनको। Les fondatrices de Chingari, Rachida Bi et Champa Devi Shukla, une musulmane et une hindoue. Elles aimeraient en faire plus, accueillir davantage d'enfants. Ces 2 amies luttent depuis 35 ans pour les victimes. हाँ, हम दोनों ने शुरू से ही जब से गैस हुआ है और हम लोगों ने उसमें सेंटर में हम लोगों को नौकरी मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब से हम लोग साथ ही में हैं और साथ में ही लड़ाई लड़के और एक साथ हम लोगों को दोनों को अवार्ड मिला। उसी अवार्ड राशि से हम लोगों ने ये चिंगारी ट्रस्ट की स्थापना की। Le prix Goldman, l'équivalent du prix Nobel de l'environnement. Elles l'ont obtenu en 2004 et ont consacré les $125 000 de récompense à l'ouverture de ce centre. Depuis, la fondation britannique Bhopal Medical Appeal le finance en grande partie. C'est le combat de leur vie, une vie de souffrance dans des familles brisées depuis le 3 décembre 1984. हमारे घर से हमारे पापा को कैंसर हो गया, 2 साल बाद वो ख़त्म हो गए। हमारे जेठानी यहीं गाजी कैम्प में रहती थी और उनका ज़बान का कैंसर हुआ, वो ख़त्म हुए। उनकी 3 बेटियाँ, एक ब्रेन ट्यूमर से ख़त्म हो गई, एक पेट के ट्यूमर से ख़त्म हो गई। उनके 3 बेटियाँ ख़त्म हो गई, माँ ख़त्म हो गई, उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए। मतलब हमारे घर से 9 लोग ख़त्म हो गए। उस दिन तो बदकिस्मती से जो बच गए थे, किस्मत वाले थे जो उस रात मर गए, जो बदकिस्मत थे। We are inside the Union Carbide Bhopal plant. This is nearby us is Savin plant,
and behind that there's a MIC plant. There they were making MIC. Monsieur Chouan était ingénieur à l'usine de MIC, absent par chance cette nuit du 2 au 3 décembre 1984, quand l'une des cuves de MIC, l'isocyanate de méthyle, l'un des composants du pesticide C20, s'est vidée, provoquant une explosion et libérant du gaz toxique pendant plusieurs heures. Depuis, tout est resté en l'état. La végétation a envahi les 25 hectares du site. After closing this plant, 35 years passed. Not a single kg of toxic waste or toxic land, soil was neutralized either by Union Carbide or either by the government. Idem dans ce qui fut le laboratoire de contrôle qualité, pas de dépollution. Monsieur Chouan a travaillé dans cette usine pendant 9 ans. Il savait que c'était une bombe à retardement. I came to know that the design was unproven design that is provided for the Bhopal plant. It was not a carbon copy of the design of the West Virginia plant. And then cost cutting, then poor training program for the operating personnel, the under capacity of the detoxifying equipment. So there was nothing provided to cope with such a huge leak of 42-ton MIC that was reacted in the 610 tank on that night. Juste derrière l'usine, bien avant la catastrophe, Union Carbide avait enfoui des déchets contaminés, des milliers de tonnes, toujours sous l'eau. These are the solar evaporation pond. They dig out the pond manually and they put a polythene layer over there. Then they are dumping all the toxic waste into those ponds. Un simple film plastique posé il y a 35-40 ans, désormais totalement perméable. And nobody has told them that it is a dangerous area because underground water is highly contaminated by the chemicals. Des milliers de personnes vivent à proximité et subissent la deuxième catastrophe de Bhopal, la contamination de l'eau, après avoir inhalé le gaz toxique il y a 35 ans. En 2004, la Cour suprême a exigé que l'État fournisse de l'eau potable aux habitants. Plusieurs années après, des réseaux de distribution ont été construits dans certains quartiers. Mais les installations fuient régulièrement. Les eaux usées s'infiltrent dans les canalisations. Comme chaque semaine, Sangeeta Shorazia, agent de santé de la clinique Sambhavna, rend visite à une patiente, Indra. यहाँ का पानी भरते हैं पहले उधर आगे जाते थे अब यहीं पे जैसे यहाँ भरना वहाँ भरना ऐसे भरते थे अब क्या है अभी 5, 6, 7 साल 8 साल हो गए करीब यहीं पानी. Mais il ne fonctionne qu'une heure par jour. L'eau est donc stockée à l'air libre le reste du temps. क्योंकि लोगों ने काफ़ी टाइम तक वो पानी पिया है और लगभग अभी 8-10 साल से साफ़ पानी आया है नर्मदा का. उससे पहले लोगों ने 10-12 साल कंटेमिनेट वाटर ही पिया है जो कि बोरवेल या हेडपम्प से यूज़ किया है तो वो उनके सीधे इंटरनली ऑर्गन पे सीधा इफेक्ट पहुंचा है जिससे उनका चमड़ी रोग हुआ है. C'est le cas de Indra qui a des irritations aux mains. Selon l'Institut indien de recherche toxicologique, la contamination de l'eau s'étend. 42 quartiers touchés en 2018, 6 de plus cette année. La clinique Sambhavna est située au cœur de ces quartiers, au plus près des victimes. मुमशाद अली, श्याम सुंदर लकीवार. आप अपना बीपी चेक करा लीजिएगा इन भैया से और फिर उसके बाद जाइए. आइए मुमशाद अली जी आइए. पहला हुआ हिलाना है, दूसरा हुआ साफ
तीसरा है ले जाना है, टेढ़ा करना है, क्योंकि ये सीधे आएगा, ये पाइप से सीधे जाएगा। हाँ, शाबाश, बढ़िया होंगे। तो याद रखेगा ये 5 वाला, हाँ जी। पहला हिलाना, दूसरा सांस छोड़ना, तीसरा में टेढ़ा करके उसको दबाना, चौथे में अंदर लेना, पांचवा मुंह बंद रखना। 1 मिनट बस। Satina Sarangui n'est pas médecin, mais son bureau est toujours ouvert pour apporter conseils et réconfort aux patients. Satina, surnommé Satyu, est le fondateur et l'administrateur de cette clinique. So this is the registration unit. Every day between 150 to 200 people come, and they come to see different doctors, Ayurveda or modern medicine. And the unique thing about this is we have a computerized medical information system. And we have in one place we can have information, medical information on more than 35,000 people. As it happens, there is no other such data in all of Bhopal. 35 000 patients victimes du gaz et de l'eau contaminée. Satyu a créé la clinique Sambhavna en 1996 grâce à la fondation Bhopal Medical Appeal. Sambhavna signifie possible. Il était persuadé qu'il était possible de soigner et de soulager toutes ces personnes. We decided that we would integrate modern medicine with Ayurveda and yoga, so that this was mainly to cut down on people's over-medication. Along with this, we also included areas that had been neglected by the government, like community health, such as research. Indra est venue consulter pour ses mains qui la font souffrir. ये अभी 2-2.5 महीने से हो रही है, पहले नहीं, मतलब ये अभी मतलब हो रही है इससे। अब पानी से हो रहे, पानी में भी हाथ डाले जलन होती। Elle a été orientée vers la consultation de médecine ayurvédique. Dr Rupa Panti reçoit une quarantaine de patients chaque jour et constate que 20 à 30% ont des pathologies liées à l'eau. Initially, when I started my work, it was like I used to see more of the gas victims, but gradually in the last 5 to 6 years, the number of contaminated water victims has also increased. Actually, the main motto of starting Ayurveda treatment in Sambhavna was to reduce the toxic load over these victims who are exposed to chronically exposed to chemical toxins. Okay, so we are using naturally prepared Ayurvedic formulations. Indra repartira avec une prescription de Gudushi, une plante qui agit sur les maladies auto-immunes et les allergies. Parmi les 6 médecins qui consultent chaque jour, une gynécologue. Les patients de Sambhavna sont majoritairement des femmes. क्या हो गया पीरियड्स बार बार आ रहे हैं और ये हैवी ब्लीडिंग कितने दिन से हो रही है 25 डेज overall health issue is there. They might be very obese, they might be very weak. Thyroid incidences are very much in this gas victim patients. Congenital abnormalities, many times when we do target scan at 5th month, we find so many malformations and abnormal babies, anomalous babies in gas victim patients especially. In my private clinic, out of 10 patients in one, I will find that case. But here in gas victims, they're more common. Out of 10, 4 or 3 might have anomalous baby inside. Genetic deformity or malformed babies. Elle constate aussi que de nombreuses femmes de cette zone sont ménopausées avant 35 ans. Des femmes nées juste après la catastrophe. The gas-affected people of Bhopal are being treated as if they are not needed, you know, as if they're expendable. And one of the reasons which we think
is because of who they are. Because half of them are Muslims. 49% of the gas-affected people are Muslims, who in today's India are second-rate citizens, if not worse. And the other half among the Hindus, more than 80%, are those who belong to low castes. Le nord de Bhopal est imprégné d'histoire. La ville était le siège d'un royaume musulman jusqu'à l'indépendance de l'Inde en 1947. Il reste quelques vestiges délabrés. Mais depuis 35 ans, le nom de Bhopal est associé à la pire catastrophe industrielle du monde. C'est pourtant un drame oublié. Au musée du souvenir, créé par les victimes, les visiteurs se font rares. Satyu est venu dans cette ville en 1984, au lendemain de la fuite de gaz. Il étudiait pas loin, il voulait aider, sans imaginer l'ampleur du drame. I saw just people like in that you have in that picture, people in small huddles, just crying and in pain, and tears running down. And most of what I saw was helplessness, because nobody knew what to do. Nobody knew if there was anything that would lessen the pain. I remember for the first 3-4 nights, the sky remained red because so many bodies were getting cremated. Plus de 5000 morts, le chiffre officiel. 25 000 selon les autres sources. Et 574 000 personnes exposées au gaz. This is Warren Anderson. In 1972, he, along with 10 other managers, approved the hazardous design for the Bhopal plant, knowing fully well that it was going to be unsafe. Le PDG de Union Carbide est mort en 2014 sans jamais avoir été jugé en Inde. Le groupe de Bhopal pour l'information et l'action poursuit pourtant son combat devant la justice, ou plutôt ses combats. The legal battles continue on the issue of appropriate compensation, on the cleanup of the site, and also the criminal cases against the accused corporations and individuals responsible for the disaster. It is in fact a shame that after so many years later, the corporations responsible for the disaster are still investing and profiting in this country as well as all over the world. Plusieurs hôpitaux publics ont été construits pour soigner exclusivement les victimes du gaz. L'État indien en a bâti un, l'État régional 6. En moyenne, 4000 personnes s'y rendent chaque jour. 634 lits sont disponibles. C'est l'affluence habituelle au Jawaharlal Nehru Hospital. Au secrétariat d'État pour les victimes du gaz, nous avons rendez-vous avec Justice Agarwal, président du comité de surveillance de ces hôpitaux. It's a huge undertaking taken by the state government and the central government, union government we may call. Nothing is enough. Nothing in the world is enough. We are handling all sorts of complaints relating to the treatment of patients, whether it is the inadequacy in some respect on the part of the hospital or non-attention to the particular patient. There are so many vacancies of doctors, of course, but that is a general problem, not limited to these guest hospitals. Mais dans l'ensemble, cet ancien juge estime que l'affluence des patients est bien la preuve que ce système est efficace. Le son de cloche est tout autre lorsque nous interrogeons Rachna Dhingra. Pour elle, le système de santé publique destiné aux victimes est une coquille vide.
You just have to look at the reports that Justice Agarwal and his team, the monitoring committee that has been appointed by the Supreme Court of India, just have to look at the reports of the last 10 years, and every report will tell you how bad the hospitals are functioning, that there are bad quality of medicines, that there are no specialists, that 80% of posts of specialists are still vacant. There is equipment, but there is no trained staff to run that equipment. There is no treatment protocol. Ni dossiers médicaux, ni données médicales informatisées non plus. Malgré les millions investis, la santé des habitants continue de se dégrader. Et les victimes de l'eau contaminée ne sont même pas prises en compte. Elles seraient 100 000. Pour pallier les insuffisances des services de santé publique, il y a la clinique Sambhavna. Sa philosophie, ses méthodes et son cadre, une exception à Bhopal. Un écrin de verdure surprenant à moins d'1 kilomètre de l'usine. Certes, l'environnement est loin d'être sain, le sol non plus, mais tout est fait pour cultiver des plantes médicinales le plus naturellement possible. We are growing curcumin, which is very good for infections, for lung conditions. Then we are growing bala here. We have a lot of these flowers, hibiscus, and this is good for many gynecological problems, as well as people with anemia, as well as people with skin issues. Une centaine de variétés de plantes sont cultivées. Certaines sont utilisées telles quelles, en infusion ou en application. La plupart sont transformées en cachets, huile ou poudre. 85 médicaments sont produits sur place. ये निर्गुंडी ऑयल है, जो ये निर्गुंडी ऑयल है, इसको पैकिंग कर रहा था मैं, तो अभी इसका ऑयल फिलिंग हो रहा है, ऑयल फिलिंग के बाद इसका पैकिंग है। तो ये ऑयल जो है पेन ऑयल है, जो दर्द में जो मेडिसिन ना खाकर ये ऑयल से मसाज करने से बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। Et cette poudre de racines de réglisse est un remède contre la toux. Tous ces produits sont prescrits et délivrés gratuitement à la clinique. Allopathie et Ayurveda cohabitent dans la pharmacie. Les patients repartent avec leurs médicaments. Selon les études menées par Sambhavna dans les quartiers proches de l'usine, il y a 2 fois plus de décès dus au cancer et aux maladies pulmonaires, 3 fois plus dus aux maladies rénales. 150 000 personnes souffriraient de maladies chroniques. Un tableau très sombre, presque désespérant. La deuxième catastrophe de Bhopal est toujours en cours. On one side, you have the poorest people in the city, and on the other side, you have one of the most powerful corporations in the world, and that has the support of the most powerful nation. It has the support of the US government. What is happening, continuing to happen in India, in Bhopal today, the poisoning of the land and the suffering of the people are all happening because the corporation has been able to get away with it. What is happening in Bhopal is going to happen everywhere. And slow and silent Bhopals are happening everywhere, whether we like it or not. There is a continuous trespass of corporations' poisons in our bodies and in our environment. À Sambhavna, le yoga permet de soigner les corps et les âmes, en douceur, en complément de la médecine, pour réduire la quantité de médicaments absorbés, retrouver un équilibre et tenter de vivre mieux, jour après jour. Une petite bouffée d'oxygène pour entretenir l'espoir.